वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो एक प्रॉब्लम बेस्ड है, सॉर्ट वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। ये प्रॉब्लम नंबर है 2785 ऑफ टाइप मीडियम ऑन लीड कोड। एक बार प्रॉब्लम समझते हैं फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। प्रॉब्लम है, हमारे पास एक स्ट्रिंग अवेलेबल है S, जिसमें कॉन्सोनेंट और वॉवल्स दोनों हो सकते हैं और फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है, और हमें उसमें वॉवल जो है उनको रीअरेंज करना है उन्हीं की पोजीशंस पे। हम कॉन्सोनेंट की पोजीशन को टच नहीं कर सकते, सिर्फ वॉवल्स को उन्हीं की पोजीशन पे रीअरेंज करना है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ASCII वैल्यू पे। और ASCII वैल्यू में कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक की जो ASCII वैल्यू है वो 6590 है। यानी जो वॉवल्स कैपिटल लेटर्स के होंगे उनकी पोजीशनिंग पहले होगी, और जो वॉवल्स स्मॉल लेटर्स में आएंगे A to Z, जिसकी ASCII वैल्यू 97 से 122 तक होती है, वो बाद में आएंगे। और ऑर्डरिंग में A पहले आएगा, E बाद में, I बाद में, O बाद में, U बाद में। सिमिलर इसी ऑर्डरिंग में आएंगे। एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है S, जिसमें BitWorld लिखा है, I स्मॉल है, O कैपिटल है। सिंस O की ASCII वैल्यू पहले आती है तो हम O को पहले लिखेंगे और I को बाद में। पोजीशनिंग में स्वैप हो गया। सिमिलरली अगर कोई स्ट्रिंग सिर्फ कॉन्सोनेंट्स है, उसमें कोई वॉवल नहीं है, तो सेम ही स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। ओके, अगर इतना क्लियर है तो हम एक बार इस पे आते हैं फंक्शन के ऊपर। हमारे पास एक फंक्शन है सॉर्ट वॉवल्स, जिसमें एक S इनपुट आया है और हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है, S ऑफ टाइप स्ट्रिंग ओनली। अच्छा, अगर इतना चीजें क्लियर हैं तो हमें जो दो चीजें जो मैटर करती हैं वो है, एक तो इनकी फ्रीक्वेंसी कि कितने बार वॉवल्स आए और कितनी बार कौन सा कैरेक्टर आया स्पेसिफिकली, A कितनी बार आया, E कितनी बार आया, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में। और दूसरा कि अगर हम इस ऑर्डर को मेंटेन करके चलें तो हमें रीफिलिंग में ज्यादा इशू नहीं आएगा। तो एक बार के लिए अगर मैं सिर्फ इन 10 कैरेक्टर्स पे फोकस करूं तो इन 10 कैरेक्टर्स को मैं एक मैप में लिख सकता हूं, मैप ऑफ कैरेक्टर्स। और उस मैप के अंदर मैं इन कैरेक्टर्स को इसी ऑर्डर में लिख रहा हूं, मैप ऑफ इंटीजर एंड बाइट। और इसमें ऑर्डरिंग पे पहली पोजीशन 0th पे मैं कैपिटल A को दूंगा, 1 पे कैपिटल E को, 2 पे कैपिटल I को, 3 पे कैपिटल O को, 4 पे कैपिटल U को, 5 पे स्मॉल a को, 6 पे स्मॉल e को, 7 पे स्मॉल I को, 8 पे स्मॉल o को एंड 9 पे स्मॉल u को। बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ऑर्डर कर दिया है। अब इन वॉवल्स को ऑर्डर कर दिया और हम हर एक पोजीशन पे इनकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, ओके, सो नाउ एक काउंट एरे ले लिया, काउंट एरे ऑफ 10 साइज ओनली, और ये इंटीजर होगा। अगर 10 साइज है, 10 कैरेक्टर्स को मैप कर दिया हमने 0 से लेके 9 तक, इनकी इंडेक्सिंग भी इन्हीं कैरेक्टर्स को मैप कर सकते हैं। अगर मैं इसको फॉर लूप चला दूं, फॉर I equal to 0, I less than length of S, I plus plus. Now I know that अगर मैं स्ट्रिंग के पूरा इस पे एक लूप चला रहा हूं तो हर पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर आएगा, उस कैरेक्टर के बेसिस पे मैं इस काउंट की जो पोजीशन है उसको फिल कर सकता हूं। What I'm saying is I'll simply apply a switch case on SI. I'm simply dividing from here SI. Now if it is a case of capital A, then I'm simply saying count 0 plus plus. If it is a case of capital E, then count 1 plus plus. If it is a case of capital I, count 2 plus plus. Similarly, I'll do this till case small u, and I'm saying count 9 plus plus.
So my for loop, this for loop is running for the entire string just once, and I'm filling the frequency of each vowel. After this for loop, I know the frequency of each vowel in the count array, and each position is indicating which vowel it is. Okay, if this part is clear, now I need to, since S is a string, it's immutable. In most of the language it is immutable. So I need to create a result string. So I am saying the result, it's an array of byte. Now I have to fill this result. Now understand this thing. This string for vowel, so for the consonant part, this result having the same value, but for the vowel part, it is going to change. So I'll simply say for, again I'm running a for loop for the entire string, and length of s, I less than length of s, I plus plus. I'm taking a one more variable j. I'll tell you why I'm taking this. J equal to 0. J is of type integer with 0. I'm saying now, since I'm running the entire loop from 0 to end of the s, I'm saying if si is equal to, since I have to match it with the all the 10 characters, I'm simply saying all vowels. If s is equal to either of the vowel, I need to do one thing. I'll say if count j equal to 0. I am checking the frequency of the first character with the 0th index. Now it is very much possible that this count doesn't contain all the variables, all the vowels value as non-zero, because a string can have different vowels, or maybe some are missing, some are not, or it could be only the consonant string. So in that case, I need to check. If it is a 0, that means that position is not there. That means that vowel is not there. In that case, I need to j is less than 10 or count of j wait, should be and it should be an and position. Is equal to 0. In both these cases, this will run and will simply say j plus plus. In either of the scenario where if j reach to a count position where it is not 0, then this for loop will end. And now we know j is a position where the vowel exists. After this, we'll simply say our result will be equal to append, and we'll simply append in the result part. Now what will we append? We'll append the smallest ASCII vowel which present, and j is pointing to that. We'll simply say map of character j. Now j is pointing to that specific vowel, and we'll simply reduce the count of that j minus. So that next time when it comes, so this loop checks for the exact value of j. If we have used one frequency, then that we have reduced the frequency here also. If it is not a vowel, in that case we'll simply say that result is equal to append result. And now what will we append here? Simply whatever the character at the position, SI, simple, that's it. And at the end we'll simply return the result.
That's it. That's it for this problem. So how did we solve? Let's a quick revise. So we got a string. Now first we first map the characters on the positions, and we simply created an array count. Every position is indicating the frequency of the vowel. In the first for loop, we simply calculated the frequency. In the second for loop, we created a result, and for every vowel, we just use the smallest ASCII value vowel which is present, and the consonant value we kept as it is, and then simply return the result. So that's all for this solution, guys. Please comment and mention your doubts, and also mention if there is any other implementation which is possible, and another approach if there it is. Please like and subscribe. Thank you.